Welcome to your channel as an inputting various. Today we are going to discuss one of the very interesting feature of Photoshop कि Photoshop में image like shadow कैसे create करें. It's a very easy task in Photoshop, but it is very interesting task. And if you are a learner of Photoshop, then you should know these things very clearly. Okay, let's start. We are going to generate this kind of output shown in the image. It's very easy task in Photoshop. Okay, let us close this and open an image. I have opened the image. Now I want to remove the background of this image. There are many ways to remove the background. You can use the lasso tool, pen tool, etc. But I am going to use the filter command, filter extract, because this is the easiest way to remove the background in very minimum time. Now you select. If you have any doubt regarding the extract command, then you can see our previous video. Okay, now I am going to select the image. I am selecting roughly, but you'll have to select very carefully. We are about to complete. Okay, our selection is over. Now we will check the preview. First you need to fill the blue color. Then we will check the preview. प्रीव्यू में हमें पता चल जाएगी कि इमेज करेक्टली कट हुई है या नहीं, बैकग्राउंड हटी है या नहीं. वी कैन चेक इन द प्रीव्यू. नाउ यू सी वेरी ब्यूटीफुली द बैकग्राउंड रिमूव. थोड़ी सी पोर्शन रह गई है, उसे हम हटा देते हैं. ओके, यू सी इट रिमूव बैकग्राउंड रिमूव. क्लिक ऑन ओके. नाउ वी विल ओपन ए न्यू इमेज विथ वाइट बैकग्राउंड. Okay, our new image opened. Now we will drag the previous photograph to this new image. We have dragged. Now set the position. Previous को हम लोग close कर देते हैं. Now you set the position for the image. Okay. Now beautifully the image adjusted without background. On the white background it is adjusted very beautifully. Okay. Adjustment करने के बाद हम लोग फिर click करेंगे. Again we will click on the filter. सॉरी लेयर. पहले लेयर में जाने से पहले हम पहले लेयर विंडो को ओपन कर देते हैं, विंडो लेयर करके. देन क्लिक ऑन लेयर, डुप्लीकेट लेयर. नाउ यू सी अ डुप्लीकेट लेयर क्रिएटेड. नाउ वी कैन मूव द डुप्लीकेट लेयर स्लाइटली डाउन. अब इसकी फीदर को हम कम कर देंगे. गो टू द फीदर, डिक्रीज द फीदर एज पर योर चॉइस. नाउ यू सी ब्यूटिफुली वन शैडो इज क्रिएटेड. वेरी इजीली, वेरी इजी टास्क. Again we will make one more duplicate layer. फिर से हम लेयर में जाएंगे, एक डुप्लीकेट लेयर फिर से बनाएंगे. क्लिक ऑन ओके. वन मोर लेयर क्रिएटेड. नाउ मूव इट. अगेन चेंज द फीदर ऑफ दिस लेयर. फीदर को और थोड़ी कम कर देंगे. यू सी द शैडो ऑलरेडी क्रिएटेड. अभी हमें तीनों पिक्चर को एडजस्ट करनी है. हमारी फर्स्ट पिक्चर जो थी प्रीवियस वन, वो सबसे ऊपर होनी चाहिए. मिडिल वाली बीच में होनी चाहिए. लास्ट वाली पूरी लास्ट में होनी चाहिए. नाउ फॉर दैट यू फर्स्ट सेलेक्ट द फर्स्ट लेयर, देन क्लिक ऑन अरेंज. अरेंज में जाएंगे, ब्रिंग टू फ्रंट कर देंगे. ये फ्रंट में चलेगी. सेकेंड वन को थर्ड से ऊपर लानी है. Select the second layer. Again go to the layer, arrange, bring forward to bring one step. थर्ड को हमें कुछ नहीं करनी है. थर्ड वन is already at the back. Now you see how beautifully the picture is created. The two set of the same picture we have created in very less time. I think you understood very better way. Thank you. Thank you. Thank you.